Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So students, today we are going to talk about a very interesting topic and आपको सभी को पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में आज हम सीखने वाले हैं. तो वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट. Let me just here composite numbers and co-prime numbers. So now let's start with even numbers. I hope everyone knows about even number. Okay, और अगर किसी को नहीं पता है what is even number, so please let's see what is even number. So even numbers are natural numbers that are divisible, that are exactly divisible by 2. That are exactly is a very important word here. So what I mean to say exactly means अगर आप किसी भी नंबर को लोगे और इसे डिवाइड करोगे 2 से तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0. तभी हम कह सकेंगे कि वो नंबर इवन नंबर है. सो फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, then 32, 36, all these are even number because they are exactly divisible by 2. और या आप इसे कह सकते हो कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर होते हैं. Now let's go on odd numbers. So what is odd numbers? So इसी का ही opposite. What is odd numbers? The numbers which are not divisible by 2. ऐसे natural numbers को हम क्या कहते हैं? Odd number. Numbers which are not is very important, not divisible by 2. Okay, so for example here we'll take, so 1 ऐसा है कि जो it's not divisible by 2, then 3 is not divisible by 2 because odd number ऐसे numbers होते हैं कि अगर आपने उसे 2 से डिवाइड किया तो उनका जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है. Okay, so 1, 3, 5, 7, 9, all these are etc. All these are odd numbers. Next number is prime number. Prime number are very important numbers and everyone should know about these numbers. So prime numbers are those which are greater than 1. क्या कहेंगे आप इसे? Greater than 1. और ऐसे नंबर्स की जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं तो आप कह सकते हैं नंबर्स ग्रेटर दैन 1. नंबर्स ग्रेटर दैन 1 that have more than that have only 2 factors. Okay, numbers greater than 1 that have only 2 factors guys, only 2 factors. तो हम इसके एग्जांपल्स में कुछ नंबर से लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया नंबर 5 तो नंबर 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे जैसे कि वो एक तो नंबर 5 खुद और 1. सो 1 and 5 दीज आर द ओनली 2 फैक्टर्स फॉर 5. ऐसे ही आपके पास 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है. ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट आर कंपोजिट नंबर जो कि अपोजिट होगा. किसके अपोजिट होगा कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर्स के. नंबर्स which are greater than 1 and that have more than 2 factors. Numbers which are greater than 1 and more than 2 factors. Now let me give you examples here. Like for example you can take number 6. So number 6 ये 1 की टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है and 6 खुद के भी टेबल में आ रहा है. So number 6 has more than 2 factors. How many factors it has? 4 factors. Okay, so that's why we call this numbers as composite number. Okay, now next are co-prime numbers. These are different kind of numbers. I think most of the people don't even know what is co-prime number. So let me tell you a pair of numbers. What is co-prime number? A pair of numbers that have no common factors other than 1. Okay, so now I'll give you example so that you'll understand in better way. So let's suppose if we are going to take 3 and 8. Okay, so here student, let's take first 3. So what are the factors for 3? Factors of 3 guys, please tell me what are the factors of 3? 1 and 3. Factors of 8. 1, 2, 4, 8. Now what are the common factors guys here? Common factors, please tell me what are the common factors? Only 1. And then we call this pair as a co-prime number pair. Got it guys? I hope you find this video helpful for you guys and I think this is really important to know the difference between the different kind of numbers. Okay, so please till then bye bye, have a nice day, meet you in the next session, bye bye.